Hi friends, let us solve this problem. So 50 feet, 50.00, 50 feet, I don't know क्यों दिया ऐसा. So a 50 feet long classroom has 20 rows of seats and the adjacent rows are separated by 2.5 feet each. Simple, right? 22.50 है. And the 50 feet है, so suppose this is 50 feet. So यहाँ पे first row होगा, यहाँ पे last row होगा. And बीच में it will be 48 rows. So 2.5 का difference होगा, right? So yes, that's the part. So okay, a N2O cylinder on the front door and a CH4 cylinder on the rear door were opened simultaneously, so the gases start diffusing into the classroom. Okay. So student of which row will experience both tears and laughing? Assume both the cylinders have gases at same temperature and pressure and valves have similar dimensions. So okay, the pinhole का जो radius है वो same है, right? Similar dimension. And वो हमें ढूंढना क्या है? Students of which row will first experience both tears and laughing? After all the gases have been diffused, everyone will actually experience this both tears and laughing. But you need to find who experiences it first. So first you need to एक होता क्या है? Tears and laughing क्यों होगा? So you should know that N2O is known as laughing gas, and it मतलब it creates laughter, and the CH4 it is it creates tears. If you inhale, if you the gas is diffused, there's tears coming out, right? So we need to find where will this happen. So basically तो वही क्वेश्चन हो गया, एक होल से ये निकला, एक होल से वो निकला, सो कहाँ मीट करेगी, तो वही करना है, दिमाग लगाना नहीं है. So हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता है, so we can apply that and just solve the question. So since CH4 is lighter than laughing gas N2O, forward will diffuse at a faster rate. Yes, because the molecular weight is less. I told you rate is proportional to 1 upon root m. So lesser the molecular weight, more is the rate. So let us assume this is 50 whole, this classroom is 50 centimeter long, right? So let us assume that this meets at some x value, right? So x is where this, wherever it meets, it is x from this N2O. So N2O से x है, and तो यहाँ से कितना होगा 50 minus x. कॉमन सेंस, सपोज दिस इज द वेरेवर इट मीट्स. डायग्राम में तो क्लियर दिया हुआ है, समझ जाओगे. सो अगर इफ सिंपल सी बात है, इफ N2O ट्रैवल्स x, N2O ट्रैवल्स x, and तो दिस विल 50 minus x at a point of intersection of these gases, right? Because दोनों का सम 50 होना चाहिए, because 50 is the length of the classroom. So let x be from the front door and two types of gates. So let us find where the two types of gases meet first. So according to Graham's law, 50 minus x upon x is root 44 upon 16. Simple सी बात है, 50 minus x upon x. This is the time. This is the distance. Rate is directly proportional to distance. More the rate, more the distance covered. So इन्होंने एक टाइम फ्रेम लिया है. टाइम इज कांस्टेंट. सपोज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कोई भी हो. अगर 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड में अगर तुम्हारा रेट ज़्यादा है, अगर R1 इज मोर देन R2 एंड फॉर द सेम टाइम D1 will be more than D2. कॉमन सेंस है. More the rate, more faster will the gas go, more distance will it cover in same amount of time. So सीधी सी बात है, this N2O will cover more distance, CH4 will cover more distance, right? Because it is lighter, so it will cover more distance. So on solving, you get the answer as 50 minus x, the distance covered by CH4 upon x, distance covered by N2O, is equal to molecular weight का. तो x का molecular ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा, तो inverse ratio, right? R is 1 upon root m. So x क्या है? x is N2O, so it is 44 and this is CHO 16. So molecular weight को निकालना आता ही है, I hope. So 44 upon 16 का root, so x comes at 18.8 feet. So 18.8 feet the distance traveled by N2O. This is less, right? Because the distance traveled by this is what? 50 minus 18.8, which is approximately equal to 31.2. Yes. So सीधी सी बात है, lighter the gas, more distance will it travel in a given amount of time. So इतना travel किया. So now हमें निकालना, अभी वो निकालना, ये गैस मीट करा, तो ये कौन सा रो है? स्टूडेंट बैठे हैं ना फर्स्ट से लेके 5th रो. ये फ्रंट डोर ये है, राइट? हमें लिखा है फ्रंट डोर से N2O सिलेंडर फ्रंट डोर, CH4 रेयर डोर. सो फ्रंट डोर से हम निकालते हैं. सो फ्रंट डोर से 18.8 फीट है, एंड वी नो एवरी 2.5 फीट में दूसरा रो है. So कौन सा रो होगा? तो सिंपल सी बात है, 18.8 we can divide by 2.5. So we see that this comes out to be 7 point something. So that means that this
this whatever the meeting of the gases is between 7th and 8th row. You can see it is between 7th and 8th row, but how much? Now what is 2.5 into 7? It is 17.5, right? So 17.5 from the door is the 7th row, right? And 2.5 into 7 is 17.5, and 2.5 into 8 is 20. So 17.5 is 7th row है and 20 पे 8th row है, and 18.8 is the line of the intersection. So कितना, so 7th row से कितना दूर है वो? So simple सी बात है, 18.8 minus 17.5, so you can see 1.3, right? 17.5. Let me write for you. Diagram से समझेगा आपको better. So this is 17.5 away from the front door. This is 20. So this is 18.8, right? You can see 18.8 distance है. So 18.8 minus 1.3, 17.5, 18.1.2 is 20. So basically 8th row से CH4 आ रहा है, यहाँ से N2 आ रहा है. अभी कॉमन सी बात है, डिस्टेंस कम है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यही पहले पहुंचेगा. ऊपर से स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, राइट? वी फिगर आउट CH4 इज लाइटर देन N2, राइट? तो अगर मैं बोलूँ ये लोग का रेस हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ CH4 ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ N2 ये है, अगर दोनों का सेम स्पीड होता तो क्या होता? ये पहले पहुंचता सीधे बात, क्यों? डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, 1.2 इज लेस देन 1.3, तो ये पहले पहुंचता. स्पीड अगर दोनों का इक्वल हुआ तो, बट अगर बोलो स्पीड ज़्यादा है इसका और इसका कम है, तो ये बहुत जल्दी पहुंचेगा, बिकॉज ये तो स्पीड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है. यू कैन सी डिस्टेंस 1.2 है, ये 1.3 है, और स्पीड ऑफ CH4 इज ज़्यादा, मोर. So basically CH4 will come here, CH4 will cover this distance quickly. CH4 का यहाँ से यहाँ आना हो, 8th से 7th row आना हो, distance is 2.5 है, 1.1.3, add 2.5. This will come here quickly, then this comes over here quickly. So basically 7th row will first experience laughter, right here. N2 पे पहले पहुंचेगा, and after just some time it will appear tears also. But this will be the first row to experience both the things, right? Because CH4 is traveling faster. It comes over here, it meets over at a similar time. दोनों गैस इधर आ गए, राइट? अभी ये स्टार्ट पॉइंट है रेस का. सॉरी मैंने पहले गलत बताया था. CH4 यहाँ पे जाएगा, N2 यहाँ पे जाएगा. सो N2 को कवर करना 1.2, CH4 1.3, पर CH4 का स्पीड बहुत ज़्यादा है. इट इज़ मोर देन द रेशियो ऑफ 1.3 या 1.2. दिस इज ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, राइट? 1.2 1.2 सेम कर लो. तो CH4 विल ऑब्वियसली रीच ओवर हियर फर्स्ट, एंड दिस विल रीच ओवर हियर बाद में. If the ratio would have different, समझे 1.2 to 0.2, it would have been 0.5, तो हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ता, पर ये वी कैन टेक दिस डिस्टेंस एज सेम, राइट? सो सीधी सी बात है, CH4 यहाँ पहले पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पे N2 पहुँचेगा. तो CH4 पहले यहाँ पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी N2 पहुँचा हुआ था, यहाँ से पास हुआ ना. सो दिस रो विल एक्सपीरियंस बोथ टीयर्स एंड लाफ्टर. सो यू कैन सी 7th रो में ही होगा. सो रीज़न भी दिया है, यू कैन रीड इट आउट. सो मैं रीड कर ही लिया होगा अब तक तो. सो ये, सो दिस इज द सोल्यूशन. 7th row will experience the tear and laughter at first, and if they ask second कौन करेगा, second will be I think 8th row. सीधी सी बात है. So hope you guys understood this video. Thanks for watching. Bye bye.